So Jai student, here we are with new content, that is condition for graphical representation of lines or consistency of lines. In the previous video, I explained you about the graphical representation of a pair of linear equation in two variable. Now here I'm going to tell you about the necessary condition for the graphical representation of lines or consistency of line. I've taken two equation, a pair of linear equations, that is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and second is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. What is the necessary condition for two lines to be intersecting? When we say that two lines are intersecting, for intersecting, the necessary condition is when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. What is a1, a2, b1, b2? Coefficient of the first equation a1 x, right, and the coefficient of x in the second equation, that is a2. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Then we can say that lines are intersecting, and when the lines intersect each other, it will be consistent, right, and it will always give a unique solution, right. जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दे विल गिव अस अ यूनिक सॉल्यूशन. दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द solution of two lines, and this is giving unique solution. It will be consistent. The necessary condition for the line to be coincident, lines are coincident when a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. It means when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, then we can say that these two lines are coincident. Sometime coincident is also known as overlapping. इसको हम overlapping भी कहते हैं, राइट. ओवरलैपिंग की केस क्या होगी? व्हेन लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, राइट. सो दिस line is also consistent, right. This is also consistent. So in this case, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, and it will give infinite many solution. When two line intersect each other, you can see here we have two line, that is this line, and again on the same line I've drawn another line. So these two lines are intersecting. This will give infinite solution, correct. Now the third condition is for the parallel line, right. Parallel lines condition is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. a1 upon a2 b1 upon b2 तो आपस में इक्वल होंगे, but third condition, that is c1 upon c2 is not equal to. अगर ऐसा होता है तो this will give a parallel line, and parallel lines never intersect each other, so they will give no solution, right. In case of कोइंसिडेंट, दे आर कोइंसिडेंट मीन्स दे विल ओवरलैप. जब ओवरलैप करेंगे तो वो क्या देंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन देंगे, राइट. और इनफाइनाइट सोल्यूशन देंगे तो इट विल गिव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन. बट इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग. वो इंटरसेक्ट कर नहीं रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो दे विल नेवर गिव एनी सोल्यूशन. इट विल बी नो सोल्यूशन, राइट. Now you can see here that this is the parallel line condition. This line is parallel to this line, right. There is no intersecting point, right. They will never intersect each other, so it will not give any solution. See, I've taken one example, x plus y equal to 10. So x plus y equal to 10 can be write as x plus y minus 10 equal to 0. At the same time, second equation is y minus x equal to 4. So y minus x minus 4 equal to 0, correct. Now see, what is the coefficient of x? This coefficient is 1. Here coefficient is 1. In this case again coefficient 1. So a1 equal to 1, b1 equal to 1, c1 equal to minus 10, right. In this case a2 is minus 1, b2 is 1, and c2 is minus 4, correct. So a1 upon a2 is 1 upon minus 1, this is minus 1, and b1 upon b2 will be 1, right. So this a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. यहाँ पे minus 1 आ रहा है 1 upon a2 की वैल्यू, जबकि b1 upon b2 की वैल्यू
1 आ रही है, तो these two are not equal, so equation are intersecting. Intersecting के लिए condition में बताया था, when two lines are intersecting, then you can see the condition for intersecting, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So for the condition of intersecting is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So this is the same condition, example for the same condition, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Now see one more example, that is 2x plus 3y is equal to 9 and 4x plus 6y equal to 18. Now again see, a1 is equal to 2, b1 is equal to 3 and c1 is equal to 9. You can say minus 9. a2 equal to 4, b2 equal to 6 and c2 is equal to minus 18. So a1 upon a2 equal to 2 upon 4, it will be 1 upon 2. b1 upon b2 equal to 3 upon 6, it will be 1 upon 2. And c1 upon c2 equal to 9 upon 18, 9 upon 18, 9 to 18, 1 upon 2. Now see that a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. These all three conditions are equal and this is the necessary condition for coincident. Coincident का केस क्या था? When a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, then we can say that two lines are coincident. और जब coincident होंगे उस केस में क्या होते हैं? We will receive infinite many solution. Correct? Infinite many solution. Infinite many solution तो होते ही हैं, उसके साथ साथ ये इक्वेशन क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे. इंटरसेक्टिंग भी कंसिस्टेंट होता है और कोइंसिडेंट लाइंस भी कंसिस्टेंट होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज x प्लस 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0. One thing you can also notice here that 2x plus 3y equal to 9 and 4x plus 6y equal to 18. There is something which will multiply, right, like 2 and here 2. Now see, 2 2 ja 4x, 2 3 ja 6y, 2 9 ja 18. So these two lines are similar. Somewhat they are similar, just it required to multiply by some number in both sides. This can be similar, right? Now see the next example 3. X plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0. Now again a1 upon a2 1 upon 2, b1 upon b2 2 upon 4, 2 upon 4 means 1 upon 2. c1 upon c2 minus 4 upon minus 12, it will be 1 upon 3, right? You can see that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. a1 upon a2 तो b1 upon b2 के इक्वल है, बट a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2. ये तीसरा डिफरेंट है, राइट? सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द पैरेलल लाइन. तो ये क्या है? नेसेसरी कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन. यहाँ पे पैरेलल लाइन के लिए नेसेसरी कंडीशन है बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. दिस इज पैरेलल लाइन कंडीशन. अब जब लाइन पैरेलल्स होंगी, सपोज वी हैव टू पैरेलल लाइन लाइक दिस. यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है पैरेलल लाइन के लिए. यू कैन सी द पैरेलल लाइंस. इन दिस केस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस. इन दिस केस व्हाट विल हैपन? दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. जब ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, व्हेन दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, देन व्हाट विल हैपन? दे विल गिव नो सॉल्यूशन. देयर विल बी नो सॉल्यूशन पॉसिबल. और सॉल्यूशन नहीं होंगे तो ये कंसिस्टेंट नहीं होंगे, इनकंसिस्टेंट, right? So for the inconsistency, there is only one type of equation, a pair of linear equation, two variable, that is inconsistent. In case of a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. केवल इस केस में हमें inconsistent लीनियर इक्वेशन मिलता है, इन टू वेरिएबल मिलता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मिलता है. while in case of a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, इस केस में हो जाए
या फिर इसके पहले जो मैंने केस बताया है ये ऊपर वाला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इन दोनों केसेस में क्या होते हैं, इन दोनों केसेस में हमें कंसिस्टेंट मिलता है, बिकॉज विल गेट सम सोल्यूशन ना, यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, बट इन दिस केस देयर इज नो सोल्यूशन, करेक्ट. सो इन दिस वे we can say that in what are the various cases we'll get the intersecting lines or parallel lines or coincident line. Thank you so much.